Hello, Matajiman, and watching Morning Pulse on Hornbill TV. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal on Tuesday briefed on India-US trade deal and said all the sensitive sectors of India's economy, particularly agriculture and dairy, have been protected. He stated that the Prime Minister, leveraging his friendly relationship and close ties with President Trump, has finalized a trade deal with the United States of America. Let's have a listen. हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पारद्वारे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। Leader of opposition Rahul Gandhi today alleged the Prime Minister Narendra Modi is under intense pressure and has been compromised. He claimed that the recently signed US-India trade deal could harm India's interests and said Prime Minister agreed to it out of fear of damage to his image. Rahul Gandhi also alleged links between the PM and the Adani issue in the US and said the government is suppressing dissent, citing that the LOP was not allowed to speak during the President's address. He urged the public to reflect on what he called growing pressure on the Prime Minister. Meghalaya Minister for Community and Rural Development, Sosanit Sosang, formally launched Sampurnata Abhiyan 2.0 in Riboy district on Tuesday, marking a renewed push to accelerate development under the aspirational district program. The launch program was held in the presence of Nongpo MLA Marial Porn, Siam, Riboy Deputy Commissioner Abhilash Paranwal and senior officers from various line departments. Speaking on the occasion, Minister Swastan says that Sampurnata Abhiyan 2.0 is aimed at achieving saturation of key development indicators and ensuring that government schemes reach the last mile. He stressed the importance of coordinated efforts among departments to improve outcomes in priority sectors identified under the aspirational district framework. Will be an inspiration to the state and to the country as a whole. Kata ketika thong kebah matang
At the same time, Kunju, yang aspirational talks, kita kami ditong lagi di target, bah ini di target ditong kita, lalu indicates, baru kita laku lamang, lalu ban bu dan yang indicate, ayah ini di target, lima kecil training. Lima kejumsian yang dijaga klik. Eselon kepala dan penenjoy pada bagian yang kita target kepada siswa dan siswa. On Republic Day, a local argument reportedly broke out in Kotdwar district, Uttarakhand's Pauri Karwal, after a group of youths objected to the name of a shop owned by a Muslim man and demanded that the word Baba be removed, citing religious reasons. The disagreement soon escalated into a communal controversy, leading to police action. Gym trainer Deepak Kumar, who was present at the spot, claims he intervened to stop the misbehavior but later found a case registered against him. He alleges that the confrontation was initiated by the other side and questions why action was taken against him. The incident has since triggered wider debate over religious identity, vigilantism and the freedom to run businesses. ऐसा है 26 जनवरी का दिन था भैया और 26 जनवरी मना रहे थे हम सबके सब मिलकर आपस में जितने भी फ्रेंड्स लोग थे। तो हम जाते हैं अपनी दोस्त की दुकान में थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बैठते हैं, हंसी मजाक चलती है। तो वहां पर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटपीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूँ, जब ज़्यादा माहौल वहाँ पर गर्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप देख तो लो कि यार कितने बुजुर्ग आदमी है, इस तरह करके मैंने उनको बोला कि यार इतने बुजुर्ग आदमी आप उनके साथ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। बोल भाई इन्होंने जो इनकी शॉप का जो नाम है, ये नाम इनको चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा करके रखा है और बाबा हमारे धर्म में सिद्धबली बाबा को बोलते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा और किसी को नहीं बोलते ना, और किसी को नहीं बोलते। तो फिर मैंने उनको बोला कि बाबा तो इनके यहाँ पीर बाबा भी होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे को भी बाबा बोलते हैं और बड़े होते तो बड़े को भी, दादा को भी बाबा बोल देते हैं। बोल नहीं, नाम तो इनको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर वहां से बाबा जी ने बोला कि मेरी दुकान को 30-35 साल हो गए हैं और ये नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। दीपक कुमार मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्या हुआ था? ऐसा हुआ, उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा। तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ही धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप पे भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, क्या कहना है आपका इस विषय में? यह मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा। गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ। देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। कौन थे वो लोग और क्या मामला हुआ था? वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया। फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को। तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। मैं किसी पार्टी को, देखो, मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं विचारधारा को सपोर्ट करता हूं, जिसकी विचारधारा अच्छी है। आज भाजपा की विचारधारा अच्छी हो जाए, हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कल आम आदमी की विचारधारा अच्छी रहेगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे। सीधी सी बात है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है। अब रही बात हनुमान जी वाली बात है, हनुमान जी तो जिम वालों के सबके आइडल होते हैं,
क्योंकि उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है जिम करने का, तो ये बात है। दीपक जी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? देखो, सहयोग तो वो दिख ही रहा है आपको कैसा मिल रहा है। अच्छा काम करने के बावजूद भी हम पर केस हो गया, मुकदमा हो गया, तो ये चीज़ आप देख ही सकते हो कि हमें कैसा सपोर्ट मिल रहा है। रही बात फैमिली की, फैमिली में मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी सी बेटी है 5 साल की। Italian ambassador to India, Antonio Enrico Bartololi, has welcomed the India-US trade agreement, calling it a positive development that reduces trade barriers and boosts investment. He said such agreements are part of a larger global vision and noted that the European Union has also successfully concluded negotiations with India. Bartololi described the partnership as a potential game changer for India and Europe, adding that it would further strengthen economic ties between Italy and India. He also highlighted cooperation in security, defense and mobility as key pillars of the growing relationship. Your take on recent India-US trade deal? Yeah, I think it's a very positive development. I think it's a very positive development because, as everything that lowers barriers and allows more and more trade and investments between partners. We are part of this grand vision because, I mean, we successfully concluded the negotiation with India as EU, and I think this will be a game changer both for India and for the European Union. And I think that can enhance also the economic partnership, but not only between Italy and India. And as you know, in our case, in the case of Europe, there was also a security and defense partnership, is what we are talking about today, and also mobility agreement that Italy and India has already agreed upon and signed. That is also a part of an important part of our collaboration. How it's going to impact the global India-US deal, changing global scenario between India and US? But I mean, there are great partners, great markets, and I think that this is going in the direction of reducing the tensions, allowing more exchanges and investments, and also reduce the risk of inflationary pressure, because I mean. Tariffs can be a very effective tool, but they bring with them the risk of creating inflation. Thank you. Thanks. AIUDF MLA Aminul Islam has claimed that the number of illegal Bangladeshi Muslims in Assam is very small. He said that if a house-to-house survey were conducted, no more than 1,000 Muslim Bangladeshis would be found in the state. Islam said that the citizenship of Muslim residents has been verified multiple times, especially during the NRC process, where documents were repeatedly examined. He pointed out that after the second NRC draft, around 19 lakh people were excluded, of which 12 lakh were non-Muslims, while only 6 to 7 lakhs were Muslims. He added that those excluded are not automatically declared foreigners, as they have the option to approach foreigners tribunals and submit documents. According to him, around 90% of the excluded Muslim applicants are likely to be declared Indian citizens. Based on this, Aminul Islam claimed that the actual number of illegal Bangladeshi Muslims in Assam could be around 1,000. You see, first of all, the Muslims of Assam, there were 108 MLA seats before independence in the state of Assam. 100 out of 108, there were 34 number of Muslim MLAs. And in 1937, the first election was taken place, and then Shillong was the capital of Assam. Then out of 108 MLAs, 34 numbers were Muslim MLAs. In 46 also, there were 34 numbers of Muslim MLAs. After independence, so many peoples left India and they go to East Pakistan when India and Pakistan was divided. You can see that there were Dhaka-Putty in Jorhat, in Dhaka-Putty, in Tezpur, in Dibrugarh, or Khulna. There were peoples from Dhaka or this
those areas from Bangladesh. So till now, the names of Dhakaipatti are in Jorhat, in Dibrugarh, and in Tezpur also. So those people left Assam after partition. They went to Pakistan or East Bengal. If those people remained after partition also in the state of Assam, then the number of Muslims would be in Assam more than 45% if the people did not leave Assam after partition. And after partition, the census, when the 1951 census was done, then there were so many areas in riverine side and borderline side, they are due to lack of communication, the people were not included in the census report in 1951. It was Dr. Hemborua, he wrote a book, and perhaps it was, the name of the book was The Red Rivers and Blue Hills. In his book, Dr. Hemborua, the former MP, he wrote that more than 55,000 of families were not included in the census of 1951 due to disturbance. A disturbance took place in 1950, and those people were not living at the time of census in 1951. And those people have been enrolled in 1961. And after making communication in riverine areas, more and more people were included in 1961 census and 1971 census. When the communication and road transportation system was going to be developed, and the more and more areas were covered, and the people were included in the census report. The increasement of Muslim people in the census reports of the decadal gap, the only reason was that the more and more people were included after in the next census, when the communication and route transportation system was developed. And on the other hand, when the Assam was a state with neighboring states, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, those states were in, once upon a time, those were under Assam. When the states have been separated, then the Christian and Hindu, percentage of Christian and Hindu decreased, and as the Muslims have been residing in the state of Assam from before independence, so when the states have been separated, then the percentage of Muslims have been increased in the state of Assam, because the number of Hindu and Christian people decreased as the states were separated. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.